Hello, CLAT aspirants. Here we begin. What is asked by CLAT? Yes, CLAT क्या पूछता है? इंग्लिश सेक्शन कॉन्कर करना कितना इजी है, इंग्लिश में क्या क्या तैयारी करनी है और पिछले प्रीवियस इयर्स पेपर से हमें क्या होमवर्क करके जाना है, मतलब PYQs, CLAT पेपर और हमारा आने वाला क्लैट इनफैक्ट कैसा होगा, राइट? इसके लिए हम एक बिट ऑफ होमवर्क जो करके आए हैं और आपके लिए पूरा पर्सपेक्टिव लेकर आए एलपीटी से, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं आज. What is going to be asked? Yes, this would make us prediction 100% correct. What CLAT asks in English and what can be asked in English, right? So let's start with today's video with it and discuss the things in the English section, right? Please note each and everything briefly and do write to me also what problems you face in the English section, because unless and until you do that, we would not be able to come across your problems and tackle those problems. Let's start. The first thing and foremost thing, how CLAT asks questions in English section means what are the questions we expect CLAT can ask, right? This is a very important guide for the CLAT aspirants. CLAT aspirants need to know, very important, when they are on their journey, moving towards their goal, their destination, yes, to know what is going to be the paper like. This is an academic use. This is something which is academically very, very important to prepare yourself thoroughly, wholeheartedly and devotedly, religiously doing your work, that how CLAT questions could be there. To begin with, yes, to begin with the things and the scenario, English section, first and foremost thing. What is an English section? The reading comprehension. Now, reading comprehension plays a pivotal role in the English paper. If you have the reading section, that is the comprehension skills. That is why reading makes a perfect lawyer. So, you have to have good comprehension skills to excel in the CLAT paper. Besides that, you need to have the backbone, that is vocabulary, which acts as the backbone of English. Grammar, yes, a bit of grammar. You know that CLAT people, the CLAT consortium has prescribed us the book Wren and Martin, which is a glossary and a perfect panacea for English grammar. Besides that, you have logical understanding. You know, critical reason and English are so much merged into each other. That means CR and English, if you see, this is RC and this is CR. Both are so much interconnected with each other that you cannot, discriminate or distinguish the two. Their logical reasoning is also a part and parcel of the English section. Besides that, you have to have an analytical reading, the pros and cons of the action, why this and why not this. So this will also be very important. Focus on comprehension, not on roting. Rote means mugging up the things. If you mug up the things, if you do cramming, rote learning, mugging, then you will not be able to excel in the paper, right? Moving out further to our section, that what we are supposed to do and how we will move forward in our paper, let's start. Now, moving further in our preparation, we have a paper pattern. What is the paper pattern like? The paper pattern consists of 22 to 26 questions. Now, when we have 22 to 26 questions, that means we can have, we took take an average, usually we have 24 to 25 questions. It could be more or less, so we have taken up of this scenario. Then we have a passage, sometimes 4 or sometimes 5, not exceeding that, the passages in the CLAT paper. The passage consists of 450 to 500 words. As per the claim of CLAT, we have a paper where it's very easy to skim through the paper and do the passages. Questions are based only on the passage. Please note, your periphery, your boundary, your circumference is all around the passage, means everything is in the passage. Deep reading, read between the lines, very careful reading, and that will help you to excel the CLAT paper. Not only direct grammar rules, but the questions. Now, naturally, if you have to do the questions, you need to know the basic grammar rules. Some rules where we keep doing them so that your understanding of the CLAT paper is perfect in it, right? Let's move further to the types of passages.
what are the types of passages asked, right? If I would say, it would not be wrong, fiction rules the world. Why? Because there is more of colloquial diction. What is colloquial? Colloquial means a conversational style. We feel more of a personal touch in the passages. There is more of personal touch. There is one-to-one reading, and they are informal in nature. And if you have done your homework and you've gone through the last CLAT paper too, you would understand that we have all variety of passages. The narrative passage, where we have more of a subjective tone. The person, the writer, you would find is speaking in I or we narrative style. We also have our descriptive passages, which describe the things in detail, and you form a vivid imagery of the things. The ideas are clear, they affect our sensory perceptions. We have argumentative passages, like an argument of a lawyer, and they present the things with a razor keen, sharp perspective and intellect. Besides that, analytical, the pros and cons of the action, means the positive and negative aspect, everything is touched upon with the analytical style. Contemporary issue cannot be missed. Contemporary word itself means at this time. So contemporary means something which has to be related with the things which have been existing at this scenario. We also have social themes, we have legal themes sometimes, and editorial style context passages, like we recently had a passage like, for example, talking taken up from the Hindu, or about any act or anything related to a topic of CLAT, would also add more of spice and flavor to our paper. These passages make us quite crystal clear about the pattern of passages. If you see, if we go down the memory lane from CLAT 8 till present time, we have variety of passages. And these passages are something which come in this broad umbrella. This pattern, this style, and these questions will not be far ahead from the topics we are discussing. So, since we keep doing wonderful passages and we keep telling you about different scenarios or things of the passage, it's very important that you understand what type of passages we expect in the CLAT paper, right? This helps us to also understand and get the grip of the tone of the passage, right? Moving further, question type, very, very important question. I come across and I conquer this question very often in the online or offline class. Yes, what is the central idea of the passage? What is the main idea of the passage? What is the gist of the passage? What is the crux of the matter? What is the writer trying to say? Or how would you summarize the passage? Is there any difference? No way, there is no difference. They mean one and the same thing. They mean something. That what is the basic ideology? If you have to define the passage in one line, pick up the key words. These key words would help you to develop this. What is it? The main theme. You all have done this till your 12th, the central idea of the passage, because this central idea converts the whole thing in a summarized form in one line if we have to tell about the passage, right? Turning to the author's core message, right? That is the gist of the matter, if we say, or we would make it the crux, right? Meaning the same. These are the primary purpose of the title based questions, because if you know the central idea of the passage, it is very easy for you to judge the title of the passage too. And the big picture understanding, ultimately, whenever I'm doing, suppose I'm doing on sedition law, 124A article of IPC, Indian Penal Code. In that case, sedition means speaking against the government. If you speak against the ruling government, you'll put behind the bars. This kind of law, which is archaic, old and outdated, out of fashion nowadays, is still prevalent. And what is the relevance of it, and what things have need to be changed, and bail is demanded in such a law, is kind of thing which is to be turned upon, and writer is raising his voice. Now when we have this big picture understanding of the passage, it becomes easy for us to get hold of the passage, right? Let's turn to further
other things of the paper. That means आपका एक क्वेश्चन पक्का है कि आपको पैसेज अच्छे से समझना है. सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, टाइटल, थीम, टोन, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पैसेज है, इंग्लिश की बैकबोन है और इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चंस होते ही हैं. क्वेश्चन टाइप में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फरेंस. इन्फरेंस मीन्स what is the writer trying to say? Right, this is an implied meaning. It's a logical conclusion, right? It's an implied meaning, hidden idea, author का assumption and read between the lines. मतलब कहा जाए तो कहना क्या चाहते हो भाई, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्लैट पेपर के लिए. आगे बढ़ते हैं. हमारा वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी अगर आपके पास पैसेज में लिखा है he is a knave, naturally in this scenario you need to know he is a charlatan. You need to know what is a charlatan. Without it you cannot move further. You are stuck. So not to be stuck, read the passages, mark the vocabulary, see what is the synonym and antonym meaning, the phrases and expressions, what is the contextual understanding. You don't need to be a thesaurus. You don't need the help of your Google. You yourself are a thesaurus. We teach us in such a way that the root words, the basic understanding, the contextual meaning, what is this line trying to say? We make it crystal clear to the students how to grasp and understand vocabulary and vocabulary based questions, right? So if he's a quack, he's an imposter, he's a person who is a fraud, it's easy to detect and catch the word from it. So you don't have to mug up the synonyms and antonyms, phrases or expressions. You are yourself a dictionary and we do that at LPT. Moving further to the question types, an important question, author's tone. Author का बोलने का तरीका क्या है? Attitude क्या है? क्या ये क्रिटिकल है, क्या ये सब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव तो नहीं, लॉरेटरी तो नहीं. और इसीलिए ऑथर की टोन उसके इमोशनल स्टैंस, उसकी पोजीशन को बताती है कि राइटर किस एंगल से पैसेज लिख रहा है. इज ही लॉरेटरी, praising or glorifying the things, or is he critical, finding faults or mistake or picking holes, or is he optimistic, full of ray of hope? In this is to be judged or being very pessimistic or cynical in his approach. This approach, this attitude makes up the tone of the passage, a question relevantly, importantly and repeatedly being asked in CLAT. The emotional stance, the perspective, the attitude towards the topic. लास्ट की 3-4 लाइंस पढ़ना मत भूलिएगा, जिससे हम एक्चुअली टोन को फाइनली जज और एक रेलेवेंस देते हैं, एक डिजाइन को बताते हैं कि क्या टोन होगी. क्रिटिकल भी हो सकती है, न्यूट्रल भी, स्केप्टिकल, राइटर डिसबिलीव कर रहा है चीजों पे तो स्केप्टिकल टोन हो सकती है, राइट. मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अगर कोई डेटा है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पैसेज में, डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिक रेफरेंस है, लाइन क्वेश्चन में बेस्ड है, ये कैसे हो सकता है? एक्यूरेसी और स्कैनिंग स्किल्स से. कैसे? जैसे हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल 29%, ये है हमारा फैक्चुअल टोन, 29% कन्विक्शन रेट है. अगर 29% कन्विक्शन रेट है तो इसका मतलब बाकी के लोग कितने हुए? इससे आप एक इन्फ्रेंस भी निकाल सकते हैं. 71% पीपल आर इनोसेंट, जिनको ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है. कितना इजी ट्रिक है, कितना इंटरेस्टिंग चीज है, जिससे आप आराम से इस चीज में एक जजमेंट बना पाए, राइट. मूविंग फर्दर टू लॉजिकल फ्लो ऑफ द क्वेश्चंस. सीक्वेंस क्या है आइडियाज की, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर कंक्लूजन बेस्ड. मतलब कहा जाए तो आरसी में से लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन करना है. आपको समझना है कि पैसेज में से आप कैसे एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस बना सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो होगा जब भी आप कर रहे हैं. तो ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन
किस तरह से होगा आपको समझना है। पहले पैसेज को स्किमिंग और स्कैनिंग करनी है, एक माइंड मैपिंग करनी है, सीक्वेंस बनाना है आइडियाज का, और चीजों को इसको पढ़कर ही आप एक लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन को कर सकते हैं। दिस इज अटमोस्ट। कॉमन ट्रैप्स, बच के रहिएगा। देखिए इन ट्रैप्स में, इन हनी ट्रैप्स में मत फंस जाइएगा। बेट्स देता है क्लैट आपको, एक्सट्रीम ऑप्शंस ध्यान रखिएगा। हम एक लिस्ट देते हैं पूरे एक्सट्रीम वर्ड्स की, जिनको यूज मत करिएगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंग, वो आपको वर्ड्स कुछ ऐसे देगा जो मीनिंग नहीं हो। पर्सनल ओपिनियन आपका, अब क्या है, हमने कोई कह दिया कि हमारा कोई ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, आपका और मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो क्या, ऑथर का ओपिनियन। इमोशनल आंसर्स मत दीजिए, ट्रैप्स में मत फंसिएगा। हाफ राइट इज नॉट राइट, हाफ ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, अट्रैक्टिव रॉन्ग आंसर, पूरी लाइन राइट है, लास्ट में दो वर्ड्स, इट इज, कैंसर इज मैनेजेबल, डायबिटीज कैन बी ट्रीटेड, इट इज नॉट रिटन। क्या ये पैसेज कह रहा है, क्या ये पैसेज जस्टिफाई कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें। अब क्लैट कैसी रीडिंग चाहता है? क्लैट चाहता है क्रिटिकल रीडिंग हो, स्पीड रीडिंग हो, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, टाइम उतना लगाना है जिससे पैसेज समझ आ जाए और हम क्वेश्चंस कर लें। अब 24 क्वेश्चंस 24 मिनट्स बहुत है, आराम से हम पैसेज पढ़ते हैं इन 3-4 मिनट्स एंड वी डू द क्वेश्चंस फर्दर, सो वी आर इजीली एबल टू कंप्लीट इन 5 to 6 minutes द पैसेज एंड द क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन डेप्थ कैसी है आपकी, आप इसमें सोच पाते हैं कि नहीं, क्या चीज को एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप मॉक को एनालाइज करते हैं, तो क्या आप एनालाइज कर रहे हैं इसको, कि इंटरप्रेट कर रहे हैं उसमें क्या है। ये लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का एक कॉमन गोल होता है, और क्लैट एक्चुअल में एक्सपर्ट्स चाहता है, कॉन्शियस चाहता है लॉ के, नॉट रोट लर्नर्स। आपने इस पैसेज को पढ़ा तो आपने क्या मीनिंग निकाला, ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करते वक्त ये ध्यान रखिए कि एक हैबिट बना लीजिए रीडिंग की। 30 minutes to 1 hour रीडिंग करनी है भाई। अगर क्लैट करना है, एनएलयू जाना है, तो रीडिंग करनी है। रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट लॉयर। एडिटोरियल रीडिंग करिए, टाइम प्रैक्टिस करिए, घड़ी लगाकर 30 मिनट्स में हमने ये एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा, 7 to 8 मिनट्स में आराम से आप एक एडिटोरियल सेक्शन पढ़ सकते हैं। एनालाइज करिए, मेन आइडिया निकालिए, उसका टाइटल करिए, इन्फ्रेंस निकालिए, राइटर का क्या व्यू पॉइंट है, वो कैबरी बिल्डअप करिए, और रेगुलर मॉक्स दीजिए। एलपीटी के मॉक्स पनिश यू फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। डोंट मिस एनी क्लैट। हमारे ऑल इंडिया मॉक्स भी होते हैं और बाकी सारे, जिनको आप अपनी स्ट्रैटेजी में, प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, अगर हम कंक्लूड करें तो क्या कंक्लूजन है, क्लैट कैसे क्वेश्चंस पूछता है। पहले अगर हम 1 मिनट इस चीज को देखें, तो लास्ट टाइम क्लैट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले अगर देखें तो उन्होंने पहला पैसेज दिया था फ्रॉम एनिमल फार्म। पूरी तरह से देखिए, एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की फेमस नॉवेल है, इसमें से पैसेज दिया गया था। और आप सरप्राइज्ड होंगे कि दूसरा पैसेज भी सेम राइटर, ये राइटिंग जॉर्ज ऑरवेल की है। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, बल्कि हम तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको पढ़ना है। और अगर हम मूव ऑन करें तो हमारा पैसेज 2, सेकेंड पैसेज क्लैट का, पैसेज 2 क्लैट पेपर ने लास्ट ईयर पीवाईक्यू को देखें तो जॉर्ज ऑरवेल से व्हाई आई राइट, ये भी एक ही राइटर का। आप देखिए, मतलब बनाने वाले पेपर ने, पेपर सेटर ने ये सब चीजें एक फिक्शनल वर्ल्ड से ली हैं। इसके भी राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, राइट। अगर हम थर्ड पैसेज की बात करें क्लैट ने जो दिया, वो पैसेज 3, ये पूरी तरह से देख लीजिए। पैसेज 3 स्वामी विवेकानंद का पैसेज था। स्वामी विवेकानंद का पैसेज एजुकेशनल पॉलिसी पे था, एंड नेचुरली उनके व्यू पॉइंट्स को समझा रहा था। इफ यू टर्न टू पैसेज 4, जो पैसेज 4 था, आपने अगर पेपर अच्छे से देखा हो तो ये आर के नारायण का पैसेज था, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आर के नारायण, एस्ट्रोलॉजर्स डे।
तो आपको मैंने गलत नहीं कहा था कि फिक्शन रूल्स द वर्ल्ड। सारे राइटर्स हैं, सारे फिक्शन बेस्ड पैसेजेस हैं, और सारे पैसेजेस हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर करते हैं कि ये सारी शिफ्ट है। मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया पे क्वेश्चन है, कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी पे क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस पे है, स्पेसिफिक डिटेल है, लिटरेरी डिवाइसेस पे क्वेश्चंस है, टोन्स पे है। ये सारी चीजें हमारी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करती हैं कि आने वाला पेपर कैसा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश ग्रामर पर नहीं होती, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग और रीजनिंग पे होती है। अगर आपने मास्टर रीडिंग कर ली तो आप मास्टर करेंगे क्लैट का इंग्लिश पेपर। इट्स एट मोस्ट दैट क्लैट इज योर्स इफ यू आर अ वेल रेड person. So don't miss it and keep doing it. Happy CLAT preparation. Thank you, students. And don't forget to write me your problems related to the CLAT paper. Thank you.